Assalamu alaikum students, welcome to the English second year. I am Muzaffar Hussain, lecturer Islamia Boys College, Quetta. As we were discussing the spider in the fly, the fourth chapter of the English book second year, it is lecture part G. So we were discussing how to give class presentation, and we were discussing some recommendations. We discussed all these slides. We discussed up till point fifth. Today we are going to discuss the sixth point. The sixth point about how to give a presentation says that remember the 10, 20, 30 rules for slideshows. When you are giving a presentation where you use slides like I'm using right now, PowerPoint presentations, so there should always contain no more than 10 slides, last no more than 20 minutes, and use a font size of no less than 30 points. What happens that this recommendation is from Guy Kawasaki of Apple. He suggests this recommendation. When you use these recommendations, use a font size of no less than 30 points. So that what happens, this last is very important as it stops you trying to put too much information on any slide. यानी जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहाँ पर स्लाइड्स के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो कि आपको रीडिंग करना पड़े। और असल में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसका मकसद ये है कि सिर्फ बुलेट पॉइंट में आप वहाँ पर पॉइंट्स वगैरह रख दें ताकि आप उनको देखकर आपको याद आ जाए कि आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में अपने क्या पेश करना है। इससे फिर रीडर्स भी बोर नहीं होते, वो इसको एक अच्छा इंप्रेशन लेते हैं। This whole approach avoids the dreaded death by PowerPoint. यानी जब आप मतलब अपने स्लाइड्स को ज़्यादा उसमें टेक्स्ट रखते हैं तो वो इसको कहते हैं death by PowerPoint. As a general rule, slides should be slide shows to you and the presenter. सिर्फ एक शो होना चाहिए स्लाइड्स की आपके और प्रेजेंटर्स के लिए. A good set of slides should be no use without the presenter, and they should definitely contain less rather than more information expressed simply. वहाँ पर जो आप कम्युनिकेशन करते हैं अपने स्पीच के साथ तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो आप टेक्स्ट ज़्यादा मत लिखिए. इफ़ यू नीड टू प्रोवाइड, अगर कभी कभार आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना होता है, क्रिएट बी स्पोक हैंड आउट एंड गिव इट आउट आफ्टर योर प्रेजेंटेशंस. यानी आप बिल्कुल एक हार्ड कॉपी में ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन से पहले या प्रेजेंटेशन के बाद. The eighth recommendation in how to give a presentation is tell stories. स्टोरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके जो रीडर्स हैं उनकी इंटरेस्ट को कैच करने के लिए, क्योंकि हम जिस तरह से मतलब स्टोरीज़ की तरफ रिएक्ट करते हैं किसी और चीज़ के बारे में हम किसी और चीज़ की तरफ हम इतना रिएक्शन नहीं शो करते. ह्यूमन बींग्स आर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू स्टोरीज़. अगर आप देखिए अल्लाह ताला ने भी अपने पैगामात हम तक पहुँचाने के लिए कुरान करीम में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ का सहारा लिया है, जिसमें हज़रत यूसुफ़ की स्टोरीज़, बाकी अंबिया की स्टोरीज़, ताकि हम तक अपनी पैगाम पहुंचा सके. तो हम भी अपने कोर मैसेज को पहुंचाने के लिए स्टोरीज़ का सहारा ले सकते हैं. स्टोरीज़ हेल्प टू पे अटेंशन एंड आल्सो टू रिमेंबर थिंग्स. यानी कभी कभार ये होता है कि हम सारे आइडियाज़ भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरी का हमें याद रहता है और स्टोरी से कनेक्टेड आइडियाज़ खुद ब खुद हमारे जहन में आ सकते हैं. If you can use stories in your presentation, your audience is more likely to engage and to remember your points afterwards. तो ये मदद देते हैं उनको याद करने में. It is a good idea to start with a story, but there is a wider point too. You need your presentation to act like a story. आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन अगर एक स्टोरी की सूरत में है तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है. फोकसिंग ऑन करेक्टर्स एंड अ चेंजिंग डायनामिक. किसी भी स्टोरी में आपने इन दो चीज़ के बारे में फोकस करना है, ख़ासतन जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं कि उनमें करेक्टर्स कौन कौन से हैं और आप उसमें स्टोरी में कहाँ पर चेंज ले आता है ताकि आप अपने मकसद को पहुँचा सकें. The ninth recommendation in how to give a presentation is use your voice effectively.
یوز یور وائس از افیکٹولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریڈرز کو آپ چاہتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ایک تو آپ کو سمجھ سکے، پھر اوپر سے وہ بور نہ ہو جائے، آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. The spoken word is actually a pretty inefficient means of communication because it uses only one of your audience's five senses. چونکہ جب ہم صرف بات کر رہے ہوتے ہیں، صرف اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے آڈینس کے جو پانچ حص ہے اس میں سے صرف ایک حص لسننگ حص کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے اسی وائس کو افیکٹو انداز سے استعمال کرے تاکہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. That's why presenters tend to use visual aids too. Visual aids means like picture I have used, I can use any sound, I can use any video. But you can help to make the spoken word better by using your voice effectively. یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی وائس کو افیکٹو طریقے سے استعمال کریں. ہاؤ ٹو یوز یور وائس افیکٹولی. ویئرنگ the speed at which you talk. یعنی آپ جس اسپیڈ میں بات کرتے ہیں اس کو تبدیل کرنا، کبھی الفاظ کو آہستہ آہستہ کر کے ٹھہر ٹھہر کے پروناؤنس کرنا، کبھی فوکس کرنا، کبھی زور دینا کہیں پر. اینڈ emphasizing change in pitch and tone. جس پیچ میں آپ بات کرتے ہیں لو کرنا، ہائی کرنا، ٹون جس ٹون میں آپ بات کریں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کے وائس افیکٹو انداز سے یوز ہو جائے. They all help to make your voice more interesting and hold your audience's attention. یہ سارا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ اپنی وائس کو اچھے انداز سے یوز کر سکیں اور آڈینس اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا. اپنے وائس کو صحیح انداز سے یوز کرنے کے لیے افیکٹو اسپیکنگ پر آپ جا سکتے ہیں یوٹیوب پر یا کسی گوگل بھی کر سکتے ہیں. Another recommendation in giving presentation is use your body too. یہاں پر بہت انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اٹ ہیز بین اسٹیمیٹڈ دیٹ مور دین دا کوارٹرز آف دا کمیونیکیشن از نان وربل. یعنی آدھے سے زیادہ جب ہم بات کرتے ہیں اور وہ جو کمیونیکیشن ہو رہا ہوتا ہے کہیں پر وہ آپ کی باڈی لینگویج پر ریلائی کرتے ہیں، آپ کے صرف اسپیچ پر نہیں. This means that as well as your tone of voice, your body language is crucial to getting your message across. یعنی آپ کے بات کرنے کا آپ جو اسپیچ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آنکھیں استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں صحیح انداز سے. آئی کانٹیکٹ جس کو کہتے ہیں ہیڈز، آپ کے ہاتھوں کے جو گیسچرز اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ تھوڑا بہت موو کرتے ہیں، یہ سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے. Make sure that you are giving the right messages. مطلب آپ صحیح میسیجز دے رہے ہوتے ہیں. آپ باڈی لینگویج کو کچھ ایسے باڈی لینگویج ہو جسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، جیسے کہ باڈی لینگویج ٹو اوائڈ میں انکلوڈس کروسڈ آرمز، ہینڈ held behind your back or in your pocket and passing the stage. تیزی تیزی سے جانا، ہاتھوں کو اپنے جیب میں رکھنا یا پیچھے رکھنا، یہ سب چیزیں ان باڈی لینگویجز میں آتے ہیں جس کو آپ کو چاہیے کہ اوائڈ کریں. یہ بیڈ امپریشن دیتا ہے. Make your gestures open and confident and move naturally around the stage and among the audience too if possible. Try to be natural because natural when you are natural, so the audience also we can say feel it, and natural is more better than being artificial or copying someone else. Another recommendation in giving presentation is always give a synthesis or conclusion. It is important that you have introduced your topic, you have also given your whole speech, but at last, another thing you have to consider is to conclude your topic. What is the purpose of conclusion? Conclusion reminds the audiences about the topics, the points you have mentioned. Display a brief summary of conclusions on a slide while you discuss the significance of the material you have presented. Your conclusion should match your talk objective and should complete your story. یعنی آپ کی جو آبجیکٹیوز ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے کنکلوژن دینا ہے، ایک آخری پیغام، ایک آخری بات جو آپ نے یا ایسی کوئی بات آپ بول چکے اس کو آخر میں کسی اسٹوری کے ساتھ، کسی پوئٹری کے ساتھ کنیکٹ کر کے پیش کرے.
Remember, this is the end of your story. You make it memorable again in a good way. यानी आप अपने कंक्लूजन को इस अंदाज से मेमोरेबल बना सकते हैं कि वो ऑडियंसेस के दिमाग में बैठ जाए. आप मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़े इस्तेमाल कर सकते हैं. योर क्रिएटिविटी मीन्स अ लॉट हियर. 12th recommendation is answer questions thoroughly and thoughtfully. Whenever you give a presentation, whenever you deliver a presentation, soon after your speech, the audience expect a question and answer session because they want to know more. They want to clear certain particular ideas. So this session is also important. In this session, there are some recommendations because if you don't conduct these sessions effectively, maybe the audience take a message and your whole speech get messed. Remain relaxed during the question period. Remember, you are the expert on this subject, and this is your chance to demonstrate but not show off your expertise in the topic. यानी ये यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि आप बिल्कुल काम बिल्कुल एक रिलैक्स होकर बात करें और साथ में आप इस अंदाज से सवालात के जवाब दे दें ताकि शो ऑफ का एलिमेंट ना आए. क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑडियंस नहीं जानते या जानते हैं, लेकिन आप एक बिल्कुल अखलाकियात में रहकर ये इम्प्रेशन मत दें कि आप ज़्यादा जानते हैं. वो बिल्कुल नहीं जानते हैं. The question period is not designed to allow the audience to harass you. ये कभी मत सोचे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर सेशन से भागते हैं. क्वेश्चन जो आंसर सेशन होते हैं ये इसका मकसद ये नहीं है कि आपको तंग करे या आपको वहाँ पर पंसाने की कोशिश करे जो ऑडियंस होते हैं. Your audience is supportive and interested. असल में वहाँ पर ऑडियंसेस आपको सपोर्ट कर रहा होता है. वो दिलचस्पी शो करते हैं ताकि वो मज़ीद जिस टॉपिक के बारे में आपने प्रेजेंट किया उसके बारे में आगाही हासिल कर सकें. When answering questions, take your time, compose yourself, and make sure you understand the question clearly and think before you answer. अगर किसी ने सवाल पूछा, सबसे पहले आप उन्हें मुकम्मल टाइम दे दें कि वो अपने सवाल को अच्छे अंदाज से पूछे, मुकम्मल करे, फिर उसके सवाल को समझे, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत सोच कर जवाब दे दें. आपने रश नहीं करना है वहाँ पर. मतलब ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इस चीज़ को जल्दी से बस ख़त्म करें, बल्कि आराम कूल जब सबके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएं तो आप अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करें. यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ डूज़ एंड डोंट्स है, यानी वो काम जो आपको करना चाहिए वो काम जो एक प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं करना चाहिए. In do's, number one, practice. Number two, look professional. Look professional means that you have a good dressing. Preview your slides, that before coming you have read your slides, you have gone through it. Clearly state your objectives and goals, यानी आपके goals आपको पता होना चाहिए. Speak clearly and at a good pace, यानी effective use of your voice. Spend time on your data, graphs, tables. जो मवाद आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनके बारे में सोचे समझे वक़्त उनको दे दें. Quote appropriate references and distinguish your work from literature sources. यानी अगर आप अपने ऑडियंस को ये बताते हैं कि आपने मवाद कहाँ से हासिल की है और वो सोर्स उनका क्या है, ऑथेंटिक जगह से आपने न्यूज़ ली है या इन्फॉर्मेशन, तो ये अच्छा इंप्रेशन देता है. नंबर 8, मेक अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस. आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलप करने की कोशिश करें. अगर आप अच्छी आई कांटेक्ट नहीं बना सकते तो लोगों की आंखों के बजाय उनके आईब्रोज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें. ये देखिए कि किसने चश्मा पहना है किसने नहीं पहना है. Conclude your talk with statement that address your objectives and finish your story. आखिरी जुमला इस अंदाज से बयान करें कि एक तो आपके ऑब्जेक्टिव को याद दिला दे और साथ में एक अच्छी एंडिंग भी हो. और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान. मिसाल तौर पर डोंट वेट अनटिल द लास्ट मिनट टू प्रिपेयर, यानी आप बैठे बैठे आखिरी लम्हों में तैयारी कर रहे हैं, ये काम नहीं करें. मेक स्लाइड्स दैट आर इम्पॉसिबल टू रीड और अंडरस्टैंड. आपने ऐसे स्लाइड्स बनाया है या तो वो दिखाई नहीं दे रहा या वो बहुत कम्प्लेक्स है, ना आप समझ पाते ना ऑडियंस.
know your material, don't know your material well without reading. यानी आप आपने सही तौर पर रीड नहीं किया, आप समझे नहीं हैं. डोंट मेक डिस्ट्रैक्टिंग गेस्चर्स, ऐसे गेस्चर्स मत वहाँ पर अप्लाई करें जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को ख़त्म करे. लाइक प्ले विद pointer, rock back and forth, play with your hair, pick your nose. These are negative gestures. Speak too rapidly, don't speak too rapidly, too slowly, too quietly or too loudly. آپ بالکل ایک اخلاقی لہجے میں ایک ایسے لہجے میں بات کریں جو جس میں جو آڈینس ہے وہ انٹرسٹ سے آپ کو سن سکے، وہ انوائڈ نہ ہو. ڈونٹ اسپیک ان اے مونوٹون اینڈ ٹرائی ناٹ ٹو ممبل. یعنی آپ ایسے لہجے میں بات مت کریں جو شروع سے آخر تک بالکل آپ کی آواز ایک جیسے ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. آپ اپنے ٹون، اپنے پیچ کبھی فورس کرے، کبھی ایمفیسائز کرے، کبھی دھیمی لہجے کے ساتھ اس طرح. ڈونٹ ٹاک ٹو ون پرسن آن اور دا اسکرین. کبھی کبھار اسٹوڈنٹس جب کلاس کے سامنے آتے ہیں تو وہ صرف اپنے ٹیچر کو دیکھ کر پریزنٹیشن دیتے ہیں یا چھت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اوائڈ کرے. ڈونٹ پینک، بی کام اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹو فنی. ہیومر ہیز اٹس پلیس ان یور سیمینار بٹ یوز اٹ جوڈیشیسلی. یعنی آپ اگر ہنساتے تو اس کو بالکل کم مقدار میں ہونا چاہیے، زیادہ مقدار میں نہ ہو کہ آپ ایک پریزنٹر سے آپ کی رول ایک جوکر میں تبدیل ہو جائے. So here we end the lecture. Thank you so much for listening.